You have an access to share the PPT, right? Yeah. If you want, I will share that my screen also. So I hope my screen is visible. Yeah. Key. Hello, friends. My name is Vijay Chilka. I am from AIF, ALTPORT India experts. So we are doing this webinar to understand different products. And today our topic is about SME category product. So we have, there are different products in the market. So every product has its own potential. So SME is a sector which has a lot of potential, which is untapped as per the Indian industry. So we are trying to explore this product. What is the opportunity? What is the risk management use? What is the strategy that you can use in this to gain the maximum return? So in this category, StepTrade has a good fund, which is known as StepTrade Revolution. And we have Mr. Ankush Jain from StepTrade, who will be explaining about this product. And talking about Ankush sir, he has around a strong, more than a decade of experience in equity and research. And he has worked with HNI clients, ultra HNI clients, and he has a deep understanding of fundamental and technical analysis. And he's managing this fund for quite a long time. So I would like Mr. Ankush Jain to tell us our clients what is the opportunity lies with the SME category for those people who are interested in this sector. Yeah. Yeah, thank you, Vijay ji and the AI PMS team for inviting me for this session. And it is all the time SME is in a hot cake among the investors, but they are not getting the allocation. And this is what, being in a SEBI registered AIF, we offer this opportunity to our investor. But before this, I just want to tell you why SME and the microcap space is a space where investors should diversify their portfolio in this segment. And for that, I have covered 4-5 points to understand this is the right time to invest into the SME space. And before starting this, I will start with the introduction about the StepTrade Capital, who offer the SME and the microcap investments opportunity through the category 2 and category 3 AIF. So StepTrade, it's a 1993 incorporated company. We started this company as a family office only. By the end of August 22, when the second generation comes into this business, and because other investors also approach them to manage their money, this generation have very clear mindset to come within this generation a very clear mindset not to manage money in a non-regulated way. This is how we established a fund management division in August 2022 and apply for our first one, which is Chanakya Opportunities Fund. It's a category 2 closed-ended fund. We got the approval of this fund in March 2023. We started this fund activity in July 2023. Also, we got another fund approval in which is category 3 open-ended fund with 1 year of lock-in, which completely focus into QIB or anchor investments opportunity. That fund approval we received in August 2023, and we started this fund activity in March 2024. Being an AIF entity, we started in August 22 with zero only. On April 2024, we achieved 100 crores of milestone, and January 2025 we surpassed 300 crores of milestone. Apart from this, in September 24, we got the SEBI approval also for gift FSC fund. It's an FME license. Now, why should invest in SME and microcap space? And before this, we need to understand SME growth in two phases. One is pre-COVID era and second is the post-COVID era. When we understand the SME growth in these two phases, then only we understand why SME is delivering this much of high return in a post-COVID era of time only. So in a pre-COVID era, this company actually, because they have a very limited finances only, so they actually targeting their product basket to the local city and local states only. But during the COVID time when everything is locked down, and they also start promoting product there online, they come to know the product demand is not only available for their local city and local states, it is open for worldwide, pan India, or even in few product cases, it is open for worldwide also.
Second, as we understand, during the COVID time, India-China dispute was happened, and Modi ji started this Atmanirbhar Bharat campaign. And Modi ji understand very well, if they want to make this campaign successful, they need to provide first support to the SMEs companies, because this SMEs company contributing 30% Indian GDPs, and this is how the ease of financing policies will start coming into this space. So in a pre-COVID era, the financial institution, banking institutions not giving funding to this set of companies, but in a post-COVID era, the financial institution, banking institutions start giving funding to this set of companies. So because of that online promotional activity, whatever the top line increase, they are start fulfilling with this financing activity, which they have to start getting through the banks and the financial institutions. Third, the online shopping penetration increase in India. So as per the Morgan Stanley reports, e-commerce market in India in 2014 was $14 billion. By the end of 24, it was $76 billion, and by the end of 2025, it was expected to touch $99 billion. And by the end of 2030, it is expected to touch $350 billion. So हम इस स्पेस में देखेंगे जितना भी ग्रोथ हो रहा है, इवन इफ वी विजिट एनी ऑफ द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, either it's Amazon, Flipkart, we've majorly found product basket from the smaller players only. So this increase of the e-commerce platform market also supported smaller players to increase their top line and the bottom lines. Fourth, and the most important in view of the sector, government of India planning for a huge expansion. Because of that, the larger players nowadays having a more order than the actual capacity, and these larger players nowadays giving sub orders to the smaller players, and because of that reason, we have seen a phenomenal change into the smaller companies, especially into the SME space of company, जहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ है उनके टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन के अंदर, because now they are getting orders from a larger players and fulfill, and these are the companies coming with the IPO and to raise money through the public, because the financial institutions which are funding it is not enough to fulfill their requirement and fulfill their top lines, and that's the reason these companies coming with an IPO and raise money through the public fund. And most important thing, what kind of company can generate a multifold of returns, where we have seen the companies having the potential to make their top line become bottom line. See, the larger players have more order than the smaller player, but they cannot make their top line become bottom line. But this smaller players having the potential to make their top line become bottom line. और यही वजह है कि आज हम देखेंगे by the end of 2020 the maximum IPO size in SME space is 20 crore rupees. Nowadays we have seen 200 crores of IPO sizes also. And why? Because the bottom line growing in a faster pace. Bottom line is the net profit, the top line is the total sales of the company. In the coming slides, I will show you how their top line and the bottom line going to be increased over the last 4 years of time. And that is what SME is showing the strong growth potential over the period of last 4 years. Now the point is SME and microcap space में हमारे को investment क्यों करना चाहिए? So that need to understand first, SME is generating a very high side of return. If you check, the BSE SME IPO index has generated 61 CAGR return in the last 10 years. If I'm comparing with the main board IPO index, it's generated only 18% of the CAGR return. And if I'm comparing with the Nifty 50, Nifty 50 has generated 12% CAGR return. So there's a 49% alpha if I'm comparing with the IPO to IPO index. SME IPO index to the main board IPO index, there's a 49% alpha. And if I'm comparing with the 43% alpha, and if I'm comparing with the Nifty 50, there's an alpha of 49%. And this is what the opportunities create for an investors, where they participate at the issue price of the allocation. And usually nowadays, because the SMEs IPO is oversubscribed by 200 times, 2000 times, and people hardly get an allocation at the time of IPO. Being on a SEBI registered AIF, we offer this opportunity to our investors. Come with us, invest in our fund, and we offer you the whole year the opportunities where we participate as a QIB or anchor investors. Institutional investors nowadays also start participating into the SME and microcap space. So as per the last financial year, even not the financial year, the till date, the Morgan Stanley invested in 6 SME companies as an anchor investors. BofA invested in 8 companies, and the HDFC Bank invested in 19 SME companies as an anchor investors. SME in market जो है ना 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव स्टार्टेड विद द SME exchange, which is BSE SME platform. 2012 to 2020, there's only 12 companies where the anchor participation is there.
But if I'm talking about from 1st January 2020 to June 2025, there's a 350 odd companies where we have seen an anchor participation. This shows very clearly कि अब जितने भी financial institutions हैं, the local fund houses हैं, AI fund houses हैं, they also get confident on the SME companies, which was completely missing in a pre-COVID era. And that is the reason not only we have seen the domestic participation, we have seen a foreign participation also nowadays into the SME space. Number of IPOs also coming very high into the SME space. So if I'm talking about 2020, that's a COVID year where we have seen only 28 IPOs got listed. In 21, there's a 60 companies got listed on the SME platform, 22, 110 companies, 23, 182 companies, and 24, 247 companies got listed. And 2025, so far, 86 companies got listed. Despite of, we have seen a major fall in the first 4-5 months of the time. This year also, so far already 86 companies got listed. Now the most important thing, can this trend going to be continue over the period of time? Because many people think SME में इतने सारी कंपनी आ रही हैं, अब शायद ये number of companies reduce होना start हो जाएंगी. I just shared only one data. There's an MSME platform. There's a 10 lakh companies got listed. Out of this 10 lakh companies, there's a 90% of the companies either doing in a business at loss stage or at survival stage only. If we eliminate this 90% of the companies, still 1 lakh companies are there. And out of that 1 lakh companies, 10% of that remaining companies having a potential to get listed on the SME platform, which means 10,000 companies. 1% of the total companies listed into the MSME platform potential to get listed in the SME or as a main board company, microcap company. So far, till date, only 1,300 companies got listed on the SME platform. So still we have an 8,700 companies having a potential to get listed on the SME or the main board as a microcap company over the period of time. And this will take at least 10 to 20 years of time to get listed all these companies on the main board or as an SME companies. So this potential is not going to be end. It is keep continue going on. और ये space में तो अभी actual में potential आना start हुआ है, and over the period of time we have seen a huge potential and a huge number of companies going to be listed, and it is going to be continued. This is the data which I have shared. How SME companies doing good post listing, and this reflect किस तरह से वो company migrate हो रही है to main board पे. And we also understand until unless company not doing good at the SME platform, they cannot migrate to the main board. Correct? So as on 30th June 2025, there's a 600 companies listed on the BSE SME platform, and out of this, 33% companies already migrate to the main board. Every one company out of 3 migrate to the main board where the company is listed on the BSE SME platform. If I'm talking about the NSE SME numbers, there are 622 companies got listed, and now 24% companies migrate to the main board. Why this percentage is coming down? Because in last 2 years, approximately 430 companies got listed, and out of this 430, 380 companies listed on the NSE SME platform. Second, SEBI changed the criteria to migrate from SME to the main board. Previously, there's a 2 years holding at the SME platform, and 1,000 investors, if any company have, they can migrate to the main board. Now, this 2 years of criteria changed to the 3 years. And that is the reason over the period of 1 year or 2 years of time, we have seen this percentage again will start increasing at the NSE SME platform. Most important concern for an SME investors is the liquidity. By the end of 2020, there's only 150 crores of daily turnover across all BSE and NSE SME companies. Nowadays, it is increased to 650 crores on a daily basis, which shows अब liquidity पहले जैसा problem नहीं है in investor, and that is the reason we have seen a huge participation at the time of IPO, and also the AI participation and the foreign and domestic institutions also. So liquidity already start increasing into this space, and it is going to be keep continue to grow. As I already said, there's a lot of companies are there जो potential to get listed on the SME platform. Now the most important thing, because which many of the investors are asking with me, Ankush bhai, there's a lot of companies are coming, and how we identify a good potential SME companies where we can invest post listing of the market, because majorly or mostly in all the companies, investor won't get an allocation at the time of IPO.
And for that, I prepared this slide to the investors. You just track the only those company where the QIB participation or anchor participation is there. So from first January 2020 to 30th June 2025, approximately 700 odd companies got listed, and out of this 319 companies, anchor participation is there. The first criteria is to use only track those companies where the anchor participation. By using this filter, you already eliminated 400 odd companies by single click. I'm not saying all these companies are not doing good, but out of 10, only 2 companies are doing good and 8 companies are not doing good. And usually the retail investor mostly get an allocation this set of companies only. But where the anchor participation is there, that ensure one thing to the investors, that some due diligence happening in this set of companies. And when we are talking about the due diligence, because being an anchor participation, we have 3 months of the lock-in, 1 month for the 50%, the remaining 50%, 3 months of the lock-in. So until unless we will not do our due diligence, we will not get enough liquidity assurance from the merchant banker side, we are not going to participate as an anchor investor. And this set of company at least assured you 2 things. One is the due diligence happening in this company, and second, the anchor part. Second, the liquidity always be better than the companies which is non-QIB. If I'm comparing the performance of this set of companies, what I found, 30% of the companies listed with 99% and above gain on day one. And if you hold this investment for a year and above time, this percentage increased to 32%. And why this percentage coming down this time? Because of the market correction from the month of Jan to the month of May. Otherwise, this percentage all the time higher than 50% and above. But mostly after 6 months of time, again we will see ये percentage बढ़ता हुआ दिखेगा हमारे को. Most important thing, the number of percentage not going to be reduced. 30% कंपनी अगर लिस्ट हो रही है 99% के इनके साथ, 1 साल के बाद भी वो परसेंटेज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, and in a downside of the market. So this shows very clearly this kind of company where the anchor participation is there, having a huge potential to generate a good return to the investor after listing of the market also. This is the slide which I have mentioned what kind of contribution given by the SME and microcap space in Indian economy. So if you see GDP, there's a 29% of the participation by the SME and microcap space. In manufacturing sector, 36% contribution given by the SME space. In export sector, 44% contribution given by the SME space, and 12 crores employment opportunities created by the SME space. This is the most important slide which I have already said कि हमने ये तो देखा 2020 तक 20 करोड़ के IPO आते थे on a higher side. Nowadays we have seen 200 crores of IPO size. So what exactly change in this set of companies जिसकी वजह से इनका जो valuation है over the period of time suddenly इतने ज्यादा change हो गए कि अभी 200 करोड़ के IPO लेकर के आ रहे हैं. So if we check in 2021, there's a 60 companies got listed, and their average top line growth is 26% and the average bottom line growth is 48%. If I'm talking about in 2022, there's a 110 companies got listed with, and the average top line growth is 30% and the average bottom line growth is 49%. If I'm comparing with the 2023 companies, 182 companies got listed, average top line growth is 36%, average bottom line growth is 79%. If I'm talking about the company listed in 2024, average top line growth is 37% and the average bottom line growth is 68%. And if I'm talking about the company listed in 2025, 86 companies so far, average top line growth is 40%, the average bottom line growth is 82%. So if we check the last 3 years company, the bottom line growth is 79%, 68% and 82%. So averagely, this set of companies generating more than 70% of annualized growth over the period of time. Last 5 years of time especially. And we need to understand, कोई भी IPO जब आता है तो उसके वैल्यूएशन डिपेंड करते हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दैट कंपनी हैविंग. एंड जब हम इवैल्यूएट करते हैं, जब 70% का एवरेज टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ हो रहा है तो वैल्यूएशन भी उसके हिसाब से बढ़ रहा है. एंड दैट इज द रीजन नाउडेज वी हैव सीन 200 crores of IPO into the SME space. And what we believe from this year onwards and the coming year onwards, now the number of IPOs
slowly and gradually start reducing into the SME space, and these company and the number of companies start increasing into the main board. अगर अभी तक हम देखते हैं तो 40 कंपनियां हार्डली लिस्ट होती थी मेन बोर्ड पे, एंड 150, 200, 250 कंपनियां लिस्ट होती थी एसएमई प्लेटफॉर्म पे. नाउ व्हाट वी बिलीव, 200 कंपनियां लिस्ट होंगी फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स इनटू द एसएमई स्पेस, एंड 100 to 150 companies got listed on the SME main board company as a micro cap company जो 100 करोड़ से 800 करोड़ रुपए का फंड रेज कर रहे हैं, वो लिस्ट होंगी मेन बोर्ड पर. एंड ये एसएमई कंपनियां ही हुआ करती थी आज से 2 साल पहले तक. बट नाउ दिस सेट ऑफ कंपनीज गोइंग टू बी लिस्ट एज अ मेन बोर्ड माइक्रो कैप कंपनी बिकॉज इनकी प्रॉफिटेबिलिटी. और ये जो मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखाया, दिस परफॉर्मेंस नॉट ओनली द कंपनी इज ऑलरेडी लिस्टेड, द कंपनी व्हिच इज ऑलरेडी प्लानिंग टू और गोइंग टू बी लिस्ट, उनके भी नंबर इसी ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं. And that is the reason from this year onwards what we expect the micro cap company जो है छोटी but main board की conditions के eligible हो रही है and going to be list on the main board instead of the SME platform. So these are the reasons जिसकी वजह से ये जो investments है वो बढ़ रहा है. Sorry, I think the screen is limited. I will share my screen one more time. तो इसमें ये अच्छी बात है कि पोटेंशियल तो है मार्केट में, राइट. जो एसएमई कैटेगरी है जो जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है, एक्सपोर्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, जैसा आपने डाटा बताया था, और इस सेगमेंट में आने से वो ग्रोथ हमको मिल सकती है, राइट. लेकिन सर आपका एक डाटा पॉइंट था कि 10 लाख कंपनीज रजिस्टर होती है जिसमें 90% सर्वाइवल होती है और 1 लाख है, और उसमें से 10% बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है. तो देयर आर 10,000 कंपनीज जो है. लेकिन ऐसा कोई अपना स्ट्रॉन्ग फीडबैक ऑन द रिस्क मैनेजमेंट साइड इन सिलेक्टिंग दिस 10,000 गुड क्वालिटी स्टॉक्स, सो वो स्ट्रेटेजी हमारी क्या क्या है, उस पर अगर आप थोड़ा लाइट शेयर करेंगे तो. Yes, absolutely. So I'll coming on that part also. So जब भी हम लोग किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं, so सबसे इंपॉर्टेंट होता है द ड्यू डिलिजेंस. That due diligence ensure, because SME space का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, because I said ना 70% or 80 companies coming within a non-QIB category where the normally a retail investor get an allocation, और जहां पे उनको लगा पता चलता है कि प्राइसेस लिस्टिंग के बाद हेवीली करेक्ट हो जाते हैं. तो ड्यू डिलिजेंस इज द की फॉर एन एसएमई एंड माइक्रो कैप स्पेस, एंड दैट इज व्हाट वी डिलीवर एज अ टीम, जहां पे मेरे पास 12 लोगों की टीम है ड्यू डिलिजेंस पार्ट के लिए. एंड व्हेन वी स्टार्ट ड्यू डिलिजेंस ऑफ एनी ऑफ द कंपनी, we first ask with the 3 years tally data and the bank statements. My team is evaluating entire tally data entry by entry and match all the data with the bank statement also. Number 1. इसके अलावा हम लोग लीगल ड्यू डिलिजेंस करते हैं टू चेक द व्हाट काइंड ऑफ लीगल लिटिगेशंस गोइंग अगेंस्ट द प्रमोटर एंड द कंपनी. सीरियस लिटिगेशन होता है वहीं पे उसको ड्रॉप कर दिया जाता है. वी ट्राइंग टू अप्रोच विद द टॉप 5 buyers and suppliers because these are the smaller players. Very easy to connect with the buyers and the suppliers to get the feedback about the company and the promoters. And usually this process will take 20 to 45 days of time. And once this process is completed and our team is giving a green signal for the company, then only will participate such set of companies as an pre-IPO round or as an anchor investor also. जब मैं एंकर इन्वेस्टर और प्री आईपीओ करता हूं तो मेरे लिए इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ड्यू डिलिजेंस तो ठीक है, इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर लुकिंग टू अंडरस्टैंड कि इनका टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ेगा फ्यूचर में कि नहीं बढ़ेगा. बिकॉज एज आई सेड ना, द वैल्यूएशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वैल्यूएशन डिपेंड करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर. जितना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा उतने ज्यादा आपके वैल्यूएशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो वी वेरीफाई देयर ऑर्डर बुक ऑल्सो, एंड बिकॉज we understand based on their order book will evaluate how their top line going to be increased over the period of time. Also we check the last 3 years consistent profitability. So if the consistent profitability is there and having a strong order book, so उनका bottom line भी उसी तरह से grow करेगा and subsequently उनके valuations भी उसी तरह से change होंगे. Example के तौर पे बताता हूँ, there's a one company that into the solar panel module manufacturing company. I cannot disclose the name right now on this platform. Last year, September 24, we invested in that company in a pre-IPO round. That time the company top line is 99 crores, bottom line is 6 crore rupees. We entered at 360 crores of post-money valuation. Recently, we did the second round of that company at 1100 crores of post-money valuation.
जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था, दैट कंपनी कैपेसिटी इज 400 मेगावाट पैनल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. With the first round of fundraising, they increased their capacity from 400 megawatt to 1.4 gigawatt, जो fully functionable हुआ उनका second week of April से. Correct? Now from this year onwards, because last financial year majorly they are into the expansion phase only, they closed with 240 crores of top line, 24 crores the bottom line. Correct? But this financial year, because they are fully functionable with 1.4 gigawatt of capacity, their top line projection is 1200 crores of top line, 120 crores the bottom line. और ये साल हम उनका IPO प्लान कर रहे हैं 3000 crores के valuation. The most important thing I said now, what kind of company can generate a multifold of returns? The company is having a potential to make their top line become bottom line. 2 years before, the company top line is 99 crores, and 2 years after, company bottom line projection is 120 crores. तो जहां पे इस तरह के पोटेंशियल होते हैं, वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर कैन गेट एन अ वेरी गुड क्या कहते हैं रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स. हम इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं. एंड हाउ वी आइडेंटिफाई दिस सेट ऑफ कंपनीज, बिकॉज व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन अ प्री आईपीओ राउंड ऑफ कंपनीज, वी आर गोइंग टू बी इन्वेस्ट इन दिस कंपनी फॉर 2 to 3 years ऑफ टाइम. और इसके लिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है टू इवैल्यूएट वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग फॉर अ मेजर एक्सपेंशन एंड द मेजर स्पेंडिंग्स. And when we evaluating all these things, we found major 6-7 sectors. फिर वो आप इंफ्रा स्पेस देख लें, आप रिन्यूएबल एनर्जी देख लें, आप डेटा सेंटर देख लें, आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम देख लें, आप ई वेस्ट रिसाइकलिंग देख लें, आप जो है लिथियम आयन बैटरीज देख लीजिए. ठीक है, तो दीज आर द सेक्टर्स जहां पे सबसे ज्यादा फोकस है. वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन देख लीजिए, अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए. देयर इज अनदर स्पेस जो बहुत जल्दी तेजी से इमर्ज हो रहा है इंडिया के अंदर. दीज आर द सेक्टर्स जहां पे हम लोग मेजरली हमारे इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं, बिकॉज ये सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज हैं. एंड ये सपोर्टिव पॉलिसीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे इन्वेस्टर को एटलीस्ट इतना इंश्योर करेगी, शायद अगर पैसा ज्यादा नहीं बना तो कम तो नहीं होगा. करेक्ट. सो एंड उसको अश्योर करने के लिए हमारा ड्यू डिलिजेंस वाला पार्ट रहता है. एंड वी वेरीफाई द ऑर्डर बुक्स एंड वी नो हाउ देयर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन गोइंग टू बी इंक्रीज. सो ये पॉइंट रहते हैं जब भी हम किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं एसएमई एंड माइक्रोकैप स्पेस पे. डीडी इज द की. सर इसमें एक और है सवाल कि ये हो गया आपने एंट्री में अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया जो आगे जाके अच्छा ग्रोथ करेंगे, और लुकिंग आफ्टर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जैसे आपने बताया कि मेजॉरिटी 30 to 34% कंपनीज मेन बोर्ड में जा सकती है. सो जो इस फंड में जो स्टॉक्स है वो मेन बोर्ड में जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और इसमें एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है? यानी एंट्री तो हमने कर ली, लेकिन एग्जिट इसमें कैसे होंगे इस सिनेरियो में? सो मैं आपको बताता हूँ, वी हैव 2 फंड्स. वन हु इज इन्वेस्टिंग इनटू द प्री आईपीओ डील्स एंड सेकंड हु इन्वेस्टेड एज एन एंकर इन्वेस्टर्स, जहां पे मेरा 12 महीने का लॉक इन है. तो जहां हम प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे लिए प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड वी आर इन्वेस्टिंग इन अ सन राइजिंग सेक्टर. ठीक है, तो जब मैं सनराइजिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो पोटेंशियली मेरा रिस्क रिड्यूस हो जाता है अनटिल अनलेस प्रमोटर माइंडसेट इज नॉट चेंज आफ्टर रिसीविंग द मनी, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट क्या कहते हैं आइडेंटिफाई थ्रू द ड्यू डिलिजेंस. क्योंकि पैसा आने के बाद अगर इंटेंशन चेंज हो जाए प्रमोटर का, दिस इज समथिंग द रिस्क इज देयर, जो मैं समझता हूँ 10 में से शायद एक कंपनी में हो सकता है, बट नॉट मोर देन दिस. अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो फिर मेरा प्रोसेस गलत है. करेक्ट. बट 10 में से एक कंपनी में वो प्रोसेस हो सकता है, बट 9 कंपनी अगर अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दे रही हैं तो अल्टीमेटली मेरे इन्वेस्टर को जो डिजायर रिटर्न चाहिए वो बहुत आसानी से मिल जाता है. करेक्ट. जब हम बात करते हैं एंकर पार्टिसिपेशन के लिए, मेरा एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या रहता है? Because we understand very well liquidity, no doubts, increasing into the SME space, but still it is in a concern. Correct? And for that purpose, we build one strategy. If our money get double within 6 months of the time, we'll exit from the cost price, and the remaining amount we hold in our portfolio for longer period of time for the further growth of the company. तो इसका एक एडवांटेज क्या हो जाता है मेरे को? पहला एडवांटेज मेरे को ये हो जाता है कि एग्जिट प्राइस में कॉस्ट होके मेरे पास अगेन I get enough money to participate in any other company as an anchor participation. And this is how we utilize this money to generate enough more returns to our investor. And that is the reason I'm thinking even in the downside of the market also, step trade revolution fund generating 26% of return
ओवर द लास्ट 15-16 months ऑफ द टाइम, मार्च 2024 से अगर अभी तक आप देखेंगे, शायद एक मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम जो है डाउन साइड फॉल में ही रहा है। उसके बावजूद भी ये फंड 26% का रिटर्न दे रहा है। एंड हम लोग ये कॉन्फिडेंट क्यों हैं, उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एनएससी एसएमई इमर्ज इंडेक्स फैक्ट। तो there's a website called niftyindices.com जहां पे एनएससी अपने सारे इंडाइसेस के मंथली फैक्ट शीट अपडेट करता है। If we visit the niftyindices.com website and visit the NSC, check the NSC SME Emerge Index fact sheet, हम क्या देखते हैं, there's a 436 companies are part of this index, correct? And this index has generated 66% CAGR return in the last 5 years. And most important, if you check the beta against Nifty 50 is 0.50. So normal common phenomena क्या होता है into the equity investments? Higher risk, higher return, lower risk, lower return. But when we evaluating this fact sheet, क्या देख रहा हूँ? This index is not generating the higher side of the return, but with lower risk, but subject to the one condition. And what's that condition? If you are getting an allocation at the issue price, not at the listing price. Because the base of this index is the issue price, जहां पे लोगों को allocation मिलता नहीं है. And this is what the opportunities we offer to our investor as an SEBI registered AIF, जहां पर हम आपके लिए QIP और एंकर के तौर पे इश्यू प्राइस पे एलोकेशन लेते हैं, जो आपको एक सर्टेन एडवांटेज देता है। तो आपने देखा BSE SME इमर्ज इंडेक्स ने पिछले 10 साल में 61% का रिटर्न दिया, NSE SME इमर्ज इंडेक्स 66% का रिटर्न दिया। Now we consider the worst case of scenario where the Nifty fall down by 30%, correct? Because you also understand I am not going to participate each and every 436 companies. Correct? So I am not considering beta 0.5. I am considering beta 1:1. Fair enough? So if market fall down by 30%, my portfolio will also fall down by 30%. But there's one advantage with my fund. And what's that? The gap between the issue price and the listing price. And here I am considering two scenarios. I am not considering the scenario of 60% or 65%. I am considering the one scenario of average listing day gain of 50%, and the second scenario is the average listing day gain of 40%. So if I am considering the first scenario of 50%, so my 100 rupees value become 150 rupees on day one. And if Nifty fall down by 30%, my portfolio will also come down to 105 in case of 30%. This is still above the cost price. If I am considering the 40% of the average listing day gain, so my 100 rupees value become 140 rupees, and 30% of the downfall of the market, my portfolio value come down to 98, is slightly lower. और जैसे मार्केट में रिकवरी स्टार्ट आएगी हम लोग पढ़ना चालू कर देंगे. So what we said to our investors, मैं इसमें और भी कंजर्वेटिव होता हूँ. I am not saying the what kind of return someone asking अंकुश भाई, if we invest in your portfolio, what kind of return we can expect? I said 20% alpha against Nifty 50, not the 30%. मैंने आपको 30% सिनारियो में बताया हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहने वाले हैं या स्लाइटली लो रहने वाले. मैं इसमें कंजर्वेटिव होकर बोलता हूँ 20% अल्फा अगेंस्ट Nifty 50. That means if Nifty fall down by 20%, my portfolio cost to cost. If Nifty generated 12% CAGR as delivered in last 2 years of time, my fund will generate 30% conservative return on the fund higher side. So this is what the advantage is जो मिलता है आपको when you have an option to get an allocation at the issue price. I think that's की learning, yeah. So कि आपको issue price में entry मिल जाती है, whereas normal investor हमको issue price में invest करने को opportunity नहीं मिलती. Yes, absolutely. क्योंकि आप समझिए ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अपने कंसीडर करते हैं द SME IPOs ओवर सब्सक्राइब बाय 200 टाइम्स, जो लीस्ट है. ठीक है, मैं लीस्ट पकड़ रहा हूँ, नॉट द हाईएस्ट पकड़ रहा हूँ. If an IPO oversubscribed by 200 times, what does it mean? If an investor applied for 200 application, then there's a probability he will get an allocation of 1 lakh. Yeah. मतलब allocation ही risk हो गया. 200 application का मतलब हो गया because the application size is 1.25 lakh rupees. So the 2.5 crore रुपए का आप application करोगे, then there's a probability you will get an allocation of 1.25 lakh rupees. और मैं ये consider कर रहा हूँ वो 100% पे list हो गया. Correct? ऑप्टिमिस्टिकली बोलता हूं तो आप जो 1.25 लाख रुपीस अर्न करोगे, नॉट ऑन 1.25 लाख रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 करोड़ रुपीस. तो जब आप रिटर्न देखेंगे आपको कुछ भी नहीं बनेगा. बीइंग एन सेबी रजिस्टर्ड एआईएफ, जब हम अप्लाई करते हैं एज ए क्यूआईबी, वी विल गेट एन प्रोपोर्शनेट एलोकेशन. सेकंड, एसएमई आईपी में आप देखेंगे
नॉन रिटेल कोटा ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, क्यूआईबी कोटा कम ओवर सब्सक्राइब होता है। क्यों? क्योंकि एसएमई जो म्यूचुअल फंड हाउसेस दे आर नॉट पार्टिसिपेट इनटू द एसएमई कंपनी एज ए क्यूआईबी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अलाउबल लिमिट जो है टू पार्टिसिपेट एज ए क्यूआईबी विच इज 60% ऑफ द टोटल आईपीओ साइज। अभी 50 करोड़ का आईपीओ तो 30 करोड़ से ज्यादा का एप्लीकेशन हो सकती है। अब 30 करोड़ का एप्लीकेशन करेंगे, 10 लाख का माल लगेगा, म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है 5,000 करोड़ का ईएम, 10,000 करोड़ का ईएम, 1 लाख करोड़ का ईएम, उनके लिए कुछ भी नहीं है। एंड दैट इज द रीजन हम मेन बोर्ड में देखते हैं कि क्यूआईबी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है देन द नॉन रिटेल कोटा, बट इन एसएमई इट्स रिवर्स कंडीशन। नॉन रिटेल ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, क्यूआईबी कम ओवर सब्सक्राइब होता है। तो वी ऑलवेज, एंड सेकंड हमारे को प्रोपोर्शनल एलोकेशन है, सो वी ऑलवेज गेट 3 to 5 times हायर एलोकेशन देन द नॉन रिटेल एप्लीकेंट, confirm allocation. The game changer is the anchor participation, because anchor participation we will get 100% of the allocation, and for that we have a good connect with the merchant bankers. So currently at this point of time we are connected with the 32 merchant bankers pan India, जहां पे अप्रोच करते हैं, डील फ्लो आता है, we do our due diligence, we met with the promoters, we visited their site also, offices also, site also, and जहां हमारे को कंफर्ट आता है, we give our anchor intent 3 to 6 months before the IPO opens. ऐसा नहीं है कि IPO ओपन होने से 2 दिन पहले दे रहे हैं, but that investment we made 1 day before the IPO opens. Even at this point of time we are देखेंगे, we have 16 anchor investments opportunities in our hand, जहां पे हमारे को 64 crore rupees का इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड, मेरे फंड के साथ जो एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि मार्केट में देयर लॉट ऑफ फंड आर देयर, बट आप देखेंगे नो फंड एट 40-50% ऑफ कैश पोजीशन। We generate 25-26% of return with 40-50% of cash position. And why we are keeping this much of cash position? Because you understand the game changer है वो anchor participant। मैंने intent दे दिया, when the IPO get approved no one knows, but whenever approved 2 दिन पहले मर्चेंट बैंक का कॉल करके बोले अंकुश भाई आपको 2 दिन बाद आपको 10 करोड़ का एप्लीकेशन करना है। So if it not keeping this much of amount in our bank account, we will lose a very big opportunities. आप सोचिए, नॉन रिटेल एप्लीकेंट गेटिंग a 0.1 to 0.2% of the allocation, being a QIB participate we get 0.2 0.5% of the allocation. It's also a part of your risk management strategy. वो जो गेम है वो हम लोगों को अच्छा लगता है। नाउ थिंक ऑफ इट, द पार्टिसिपेशन जहां पे मेरे को 100% एलोकेशन मिल रहा है, वो कितना बड़ा गेम चेंजर बन जाता है। एंड दैट इज द रीजन। फिर दूसरा मैं आपको बोलता हूँ कि मैं QIB पार्टिसिपेशन भी दे रहा हूँ। So you also understand, if I do 3 to 5 crores of QIB application, I will not get a good allocation. So we do anywhere between 20 crores to 70 crores of QIB participation, तब जाके हमारे को 10 लाख से 50 लाख का माल मिलता है। एंड मोस्टली कंपनी हम एग्जिट कर देते हैं लिस्टिंग डे ऑफ गेन, जहां पे हम प्रमोटर्स के साथ मिले हैं, हमारे को उनके बिजनेस ग्रोथ के बारे में मालूम है, बट वी डिडंट गेट एन एंकर एलोकेशन, बिकॉज सब कंपनी में एंकर एलोकेशन मिलना भी इजी नहीं है। ऐसी कंपनियों को हम होल्ड करते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बाकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, 6 महीने में पैसा अगर डबल हो गया, कॉस्ट प्राइस एग्जिट करके रेस्ट अमाउंट को होल्ड रखो, सो दैट इन डाउन साइड ऑफ द मार्केट माय इन्वेस्टर विल नॉट लूज मनी फ्रॉम देयर कैपिटल अमाउंट। सेकंड, एक और एडवांटेज होता है मेरे फंड के साथ, whenever market, everybody know the market will come down, but when it come down no one knows, but whenever it come down I have, because 40-50% of cash position, we build secondary market position in our fund, because उस टाइम पे क्या होता है, IPO मार्केट ठंडा हो जाता है, we had position in secondary market, good fundamental stocks at lower valuations, और जैसे मार्केट रिकवर होने स्टार्ट करते हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने लोअर वैल्यूएशन पे किए 40-50% का गेन देना चालू करते हैं, मैं प्रॉफिट बुक करना चालू कर देता हूँ, एंड अगेन मेरे QIB एप्लीकेशंस बढ़ने चालू हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी जनरेट द रिटर्न। तो आप देखेंगे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेपरेट रिवॉल्यूशन फंड, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में और NAV is 135, in market correction in the month of Jan, Feb and March it come down to 109। अभी निफ्टी अपने हाई लेवल से 2000 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, but we already made a new NAV of new high of NAV 143. And why so? There's only one reason: we build the position in the secondary market. Now currently we are at 26% of cash position, which was 46% previously in the month of December. तो 20% पोजीशन मैंने ऐड किया इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकंड, IPO मार्केट ने जैसे रिकवरी करना स्टार्ट किया, उसने मुझे रिटर्न देना चालू कर दिया। सो ये एक एडेड एडवांटेज है मेरे फंड के साथ, जहां पे हम लोग एक हेल्दी कैश पोजीशन के साथ रहते हैं, जो डाउन साइड ऑफ द मार्केट में आपको सेफगार्ड प्रोवाइड कराता है, एंड अपसाइड ऑफ द मार्केट में बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज लास्ट ईयर जैसे आपने देखा 250 IPO लिस्ट हुए, 250 IPO मींस 20 IPOs every month, 5 IPOs every week, and
ऑलरेडी प्रोसेस बिकम वेरी फास्ट इन इंडिया. अभी T+2 पे तो अलॉटमेंट जाते हैं, T+3 पे लिस्टिंग होता है. सो लेट अज्यूम मैंने आज 50 करोड़ का, पोटेंशियल तो काफी ह्यूज है इसमें. यस, तो Right. आज सपोज जैसे मैंने 50 करोड़ का एप्लीकेशन किया, इफ आई एम गेटिंग 0.5% ऑफ द एलोकेशन विच इज 25 लाख रुपीज, मैं 99.5% ऑफ मनी गेट अनफ्रीज ऑन T+2 एंड T+3 में वापस वो पैसा अवेलेबल है टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द कंपनी एज ए QIB पार्टिसिपेशन. तो पैसा दिखता है 40-50% फ्री, बट दैट अमाउंट ऑल द टाइम यूटिलाइज इनटू द QIB participation. And with this, we generated an additional alpha to our investors. एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, फ्रॉम 1st April to 31st March, because we have 42 crore rupees of bank balance in our bank account. If I put this money into the liquid assets and I'm considering 6% of the interest rate, I will not generate more than 2.5 crore as an interest income. But by applying into the QIB, we made 8 crore rupees of profit, और उसमें से 3-3.25 crore रुपए का unrealized gain we lost in the last quarter selling. Otherwise, this amount would be around 12-13 crores. Out of this 8 crores, 5.5 crores is realized gain and 2.5 crores is unrealized gain. So मैंने मेरे इन्वेस्टर्स के लिए एडिशनल अल्फा जनरेट करके दे दिया by investing in QIBs, which we can say ना risk free profit. करेक्ट? तो मैंने एक अल्फा जनरेट करके दे दिया, प्लस मेरे पास एक एडवांटेज ऐड हो गया. मार्केट अगर करेक्ट कर रहा है तो मैं ये जो फ्री अमाउंट पड़ा है इससे सेकेंडरी मार्केट में पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं. तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक इन्वेस्टर को कितने टाइम तक इन्वेस्टेड होना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न, और उनके क्या रिक्विजिट होनी चाहिए? यानी मीन्स क्या एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर डायरेक्टली एसएमई में जाना चाहिए, और दे शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ द अदर लार्ज कैप वैसे? यानी एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए सही आपके सवाल को टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट? आपके सवाल को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. वन, looking to invest through the EIF, and one who looking to invest directly into the SME companies. करेक्ट? तो जब आप EIF रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मैंने आपको बताया ना, आज इफ वी आर कॉन्फिडेंट टू जनरेट 20% अल्फा बिकॉज ऑफ दिस गैप बिटवीन द इश्यू प्राइस एंड द लिस्टिंग प्राइस, क्योंकि वो डे वन पे आपको एक कंफर्ट दे देता है एडिशनल गेन की वजह से, लिस्टिंग डे ऑफ गेन की वजह से, कि इफ मार्केट विल कम डाउन यू विल नॉट लूजिंग मनी फ्रॉम योर कैपिटल अमाउंट, इट विल फर्स्ट इनिशियली लूज कम डाउन फ्रॉम योर प्रॉफिट अमाउंट ओनली. करेक्ट? And because, as I already said, number of IPOs is very high into the SME space, and it is not going to be an at least for next 10 to 20 years of time. I said ना 8,700 companies के अंदर आज भी potential to get listed on the SME platform और as a micro cap company on the main board. Correct? Yeah. तो जितना longer investment रहेंगे उतना higher side of returns आपको मिलेगा. बस as this industry already start maturing, तो जैसे आप देखेंगे जब इनिशियली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स सेगमेंट इनिशिएट हुए थे, मार्केट में आए थे, हम 20% 25% के रिटर्न देखते थे. आज हम वो रिटर्न 15 से 20% के बीच में देखते हैं. जैसे जैसे एसएमई मैच्योर होता चला जाएगा, और वो हो रहा है. अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, देयर आर 12 कंपनीज जिन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट किया पूरे साल भर में. एक एसएमई कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 100 करोड़ से अबव प्रॉफिट, 4 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट दिया है पूरे साल भर में. सोचिए आज एसएमई कंपनियां 50 करोड़ 100 करोड़ के प्रॉफिट कर रही हैं. ये इसके पोटेंशियल को दिखाता है. तो जैसे जैसे ये इंडस्ट्री, ये सेगमेंट मैच्योर होता चला जाएगा, आज ये अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो कि 40-50% रिटर्न कैन जनरेट, बट ओवर द नेक्स्ट 2 years और 3 years ऑफ टाइम ये अपॉर्चुनिटीज 40-50% से घट के 20 से 30% की रह जाएगी, क्योंकि मार्केट मैच्योर होता चला जाएगा, वैल्यूएशंस बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़ते चले जाएंगे, आप सोचिए म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेशन बढ़ने चालू हो जाएंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पार्टिसिपेशन बढ़ने चालू हो जाएंगे, और फिर एलोकेशन जहां हमारे को हायर एलोकेशन मिल रहा है वो एलोकेशन रिड्यूस होते चले जाएंगे. तो व्हाट वी बिलीव ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years ऑफ टाइम, ये जो सेगमेंट है जो आज 40-50% का पोटेंशियल दिखा रहा है, कम डाउन टू 20-30%. So I think it's gives Now, a good insight. The second part, यहाँ इन्वेस्टर चेक कर रहा है कि मुझे लिस्टिंग के बाद डायरेक्टली परचेज करना है. तो उसके लिए आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड वन स्लाइड जहां पे मैंने आपको बताया था कि जस्ट ट्रैक द QIB बैक एसएमई कंपनीज ओनली. सिर्फ आप वही कंपनियां देखो जहां पर एंकर पार्टिसिपेशन है. जब आप वो देखते हो कि दीज आर द कंपनी जिनके अंदर एंकर पार्टिसिपेशन था, फिर अपना फेवरेट सेक्टर सेलेक्ट करो, पब्लिक डोमेन पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको ट्रैक करो, एंड देन डिसाइड
कि ये कंपनी में मुझे पैसा डालना चाहिए और नहीं डालना चाहिए। और जब आप वो करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे एसएमई कंपनी हमेशा इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रही है, और कंपैरेटिवली इफ आई एम कंपेयरिंग विद द स्मॉल मिड और लार्ज कैप ऑफ कैटेगरी, उनसे हमेशा अच्छा बनता हो पैसा। देखिए, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओनली वन सजेशन, लिस्टिंग के बाद अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है, सिर्फ एंकर पार्टिसिपेशन वाली कंपनीज को ही ट्रैक करो, नॉन एंकर क्यूए और क्यूआईबी कंपनीज को इग्नोर करो। लेकिन अगर वो एआईएफ के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो ऑल दिस इज टेकन केयर ऑफ। Yes. एक अच्छे क्वालिटी कंपनी में जहाँ Yes. सेंटर इन्वेस्टिंग होती है, फास्ट ग्रोथ हो सकती है, ड्यू डिलिजेंस है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। Absolutely, 100%. एंड दैट इज द रीजन मैंने बताया ना कि इसलिए मैंने आपके उस सवाल को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि यू आल्सो अंडरस्टैंड एआईएफ जैसे प्रोडक्ट के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR का होता है। इफ एन इन्वेस्टर हैविंग 10 लाख रुपीस और 50 लाख रुपीस और 90 लाख रुपीस, दे कैन नॉट इन्वेस्ट थ्रू द इनटू द एआईएफ प्रोडक्ट। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए वो जो सजेशन है, बाकी एआईएफ रूट के थ्रू जब आप करते हैं, बिकॉज वी हैव अ डेडिकेटेड रिसर्च टीम, वी हैव अ डेडिकेटेड ड्यू डिलिजेंस टीम, हम सारी चीजों को इंश्योर करते हैं। अगर लास्ट साल भर में 250 IPOs आए, we are not going to participate each and every 250 companies. Our target is to find a good quality 20-25 companies every year to participate as an anchor investor. क्योंकि अगर मुझे इतनी कंपनियां मिल रही हैं, तो जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ मेरे इन्वेस्टर्स को 20% अल्फा अगेंस्ट निफ्टी 50, वो बहुत इजी वे में हम लोग निकाल देते हैं। So that gives a very good insight to our viewers, those who are looking to invest in the SME category. And you have given a lot of clarity what is the potential, what is the risk management things that you take care of in selecting, what is the exit strategy. Hope this everything helps our investors to invest and make a wise decision on that. And heartful thank you to explaining these things to us. Thank you so much. Thank you, Vijay ji. Thank you.